Assalamualaikum and good evening. Sorry, this is probably also going to be a relatively longer video. So अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो सब्र का शरबत पिएं और इसको खामोशी से सारा देखें because this is going to be included in the final exams. पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी और उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर पजल्स के पीसीज हैं वो हमने एक एक करके डिस्कस करना शुरू किए थे. So we discussed abstraction, what abstraction is and especially what data abstraction is and how to create abstraction layers. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहला वो देखें, वरना इस वीडियो को समझने में आपको मुश्किल होगी because all of this material depends on whatever we have done in the previous videos. So इस वीडियो में हम encapsulation देखेंगे. This is the second part of our object oriented programming series. और हम इन चीज़ों को इतनी डिटेल से इसलिए देख रहे हैं because we need to conceptually understand what object oriented programming actually is instead of just learning the syntax and using that syntax everywhere. और even though लोग syntax सीखते हैं और फिर इसको इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करते हैं, but we don't want to do that. We want to learn it from really ground up so that whenever we use object oriented programming we are writing really good and robust programs. अब encapsulation को टच करने से पहले let me discuss कि what an object is in this object oriented programming paradigm. So object होता क्या है? Object की 3 या 4 properties होती हैं, जिनमें से एक property तो ये है कि every object has a unique identity. और unique identity का concept हम पहले देख चुके हैं. So for example हमारे पास एक लिस्ट है. So हम इसको कहते हैं L1 equals to let's say 1 and 2. इसमें 2 एंटिटीज हम पड़ी हुई हैं और हम एक और लिस्ट बनाएं L2 equals to 1 and 2. Even though they are same contents, but these are completely two different lists in different places in the memory. So अगर हम इनकी IDs भी अगर चेक करें L1 equals to ID of L2, so you'll see that this is going to return false because they are two different separate things. इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर एंटिटीज, दे आर बॉक्सेस जिसके अंदर जो डाटा है इवन दो अगर सेम भी हो तो दैट डजंट मीन कि दे आर the same object. There can be two different objects in different places in memory. So one of the property is that every object has a unique identity. The contents can be the same. Second property is कि जो objects हैं उनकी अपनी state होती है basically which changes with time. Which means कि जो object का data है that changes with time. Object has either both data and behavior. इसकी एग्जांपल्स हम आगे जाके देखेंगे. और जो एब्स्ट्रैक्शन वाला लेक्चर था पिछला उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स एक्चुअली देखी भी थी, जिस तरह की रैशनल नंबर है, इट हैज़ डाटा, और उसके ऊपर जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे दोज वर लाइक एक्सेसिव फंक्शंस एंड हाउ टू ऐड two rational numbers and how to take a square of a rational number. So those were operations. The data was essentially the numerator and the denominator. और तीसरी property is these objects, these black boxes, they just interact with each other by sending messages. Okay, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई. अब इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें अपने कोड को लॉजिकली या कंसेप्चुअली इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है सो दैट दीज थिंग्स कैन बी डन वेरी एफिशिएंटली. और वो ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका दैट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. बेसिकली वो हमने पिछली लेक्चर में देखा था. लेट्स रीकैप दैट. सो फॉर एग्जांपल टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि to summarize what data abstraction actually is, data abstraction is a way to organize your code, a methodology such that you identify and separate the parts which are the data and the parts which are the operations that are going to operate on data. So basically जो data है आपका वो आप अलग से black box में डाल देते हैं और फिर आपके जो operations हैं सिर्फ और सिर्फ उन operations के थ्रू ही आप data को
एक्सेस कर सकते हैं. सो ये एक छोटी सी एग्जांपल हमने की थी. दिस इज अ पॉइंट एग्जांपल. द वे दैट यू क्रिएट अ पॉइंट इज थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन. और इसके अंदर आप देख रहे हैं हर पॉइंट के अंदर यू हैव एन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड द ओनली वे you can access this coordinates is through these accessor functions. So basically हमने logically इसको एक black box में डाल दिया. और फिर अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को जाके एक्सेस करें, what you did was you simply call these accessor functions, और फिर वो accessor functions जाके आपके कोऑर्डिनेट्स को लेके आते हैं वापस. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी हैव क्रिएटेड abstraction barrier. So the first abstraction barrier is this these accessor functions get x and get y. Why is this an abstraction barrier? Because these are the closest to the data that can access the data directly. अब क्या इसके अलावा किसी और फंक्शन को डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करने की इजाजत है? द आंसर इज नो. सो अगर हमें डाटा चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इन एक्सेसर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करेंगे. सो दैट्स व्हाई दे आर द एब्स्ट्रैक्शन बैरियर. सो इसी तरह आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं और आप एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स बनाते जाते हैं. और अगर आपके पास एक हायर ऑर्डर हायर लेवल फंक्शन अवेलेबल है, जिस तरह की अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्च कर चेक करना है कि इज योर पॉइंट विद इन अ सर्कल और नॉट, देयर आर टू वेज टू डू इट. आइदर यू कैन कॉल द डिस्टेंस फंक्शन. हमने पिछली उसमें देखा था वीडियो में कि अगर हमने पता कराना हो कि एक पॉइंट एक सर्कल के अंदर है कि नहीं, तो व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट द डिस्टेंस between the point and the center of the circle, and then you see whether it's smaller than the radius or not. So अगर वो radius से छोटा है इसमें, it means कि this is going to be inside the circle. अगर बड़ा है तो फिर it's going to be outside the circle. So basically distance calculate करने के लिए if you skip this, even though this function is available and this is high level, if you skip this and you directly access the internal कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और एक्स वाई की टर्म्स में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के खुद से स्क्वायर रूट लगा के, देन यू हैव broken these abstraction barriers and then you have violated abstraction, which is really really bad. You should never do that, and that is exactly why we organize our code like this. और हमने ये भी देखा था कि अगर हम एब्स्ट्रैक्शन बैरियर को वायलेट करते भी हैं तो उसका कितना बड़ा और सवियर पेनल्टी फिर हमें भरनी पड़ती है. Again, to refresh your memory, kindly go back to the previous video on data abstraction and then view that. Now, let me quickly paste a code here. So this is our code. This is essentially what we are trying to make an object in Python, which has compound data. तो आपको पता है कि जो point होता है, it is composed of two things, either basically both x coordinate and the y coordinate. Now what we have here at this point is line number 1. Basically अगर आप देखें, this is the constructor which returns something, but we are not concerned कि what this returns, and we are treating this as a black box. And then we have the accessors which can directly access the internal details. अब सिर्फ getX और getY को पता है कि our point is represented as a list. बाकी और किसी चीज को कहीं पे भी नहीं पता कि internal representation कैसी है. So this is what abstraction is, and creating abstraction layers. अब distance अगर आप देखें तो यहाँ पे the distance basically is getting the coordinates through these accessors. अगर आप ये यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सेस कर लेते हैं, तो देन यू हैव ब्रोकन द एब्स्ट्रैक्शन बैरियर, एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन व्हिच इज रियली बैड. अगेन इसका हमने कॉन्सिक्वेंस देखा था कि अगर हम लिस्ट की बजाय यहाँ पे डिक्शनरी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका सारा कोड खराब हो जाएगा, फिर आपको हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट्स बैड. बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टाइम इज द की. अगर आपकी एक चीज़ पे टाइम लग रहा है, टाइम मीन्स इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू मनी. और ख़ासतौर पे अगर एक चेंज इतने बड़े स्केल पे आपको करनी पड़ रही है, तो दिस मीन्स के दिस इज गोइंग टू वेस्ट सम लॉट ऑफ मनी. लाइक इन सम केसेस इट कुड वेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स.
बड़े सॉफ्टवेयर में खास तौर पे. All right, so we have these functions and we can run this. I think I have changed something there. Let me put it back. Okay, now we can simply go and we can create these points here. Let me quickly create 3 points, P, Q, and the center C. Right, we can even test, even though you're not supposed to know what's inside P, we treat P, Q, and C as black boxes. But just for the sake of example, if we take a peek inside P, we get 1 and 2, the coordinates basically. Now we can simply start using these PQ as black boxes. So यहाँ पे you're passing the entire black box P and the black box C inside this function, which is going to tell whether this P is inside the circle with the center C or not. And it says that it's inside the circle. All right. Now, if we change P, can we change P directly because it's a list? अगर कोई शरारती बच्चा जो है उसको हमने मना भी किया हुआ कि आपने एब्स्ट्रैक्शन बैरियर्स को नहीं तोड़ना, लेकिन वो फिर भी वापस आता है और वो ये चेंज करने की कोशिश करता है, कैन ही डू दैट? एंड द आंसर इज यस. हाउ? बिकॉज इट्स जस्ट अ लिस्ट. अब जहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट इसका चेंज करें 5. Now if you call the same operation basically on P, and you'll see that this time it's false because now it's no longer inside the circle. हमने इसका coordinate change कर दिया and the P is changed. Okay, now this is very concerning here because यहाँ पे आप देख रहे हैं कि even though you have worked very hard and you have tried to create these abstraction barriers, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप एक abstraction barrier को क्रॉस करके दूसरे abstraction barrier को बाईपास ना करें, लेकिन जो शख्स आपका कोड यूज कर रहा है उसने आपके कोड की धज्जियां उड़ा दी और डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर दिया. एंड नाउ आवर प्रॉब्लम इज कि कैन वी स्टॉप हिम? इवन तो जुबानी तो हमने बता दिया लेकिन वो नहीं मानता. वो कहता है कि ठीक है, मैंने नहीं करना आपकी एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को फॉलो, मैंने सीधा जाके डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करना है. कैन यू स्टॉप हिम? एंड द आंसर इज in a way, yes, we can do that. So what we want is, let me show you figure. We want to do this. हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वो डायरेक्टली डाटा को अंदर से एक्सेस कर ले. And in order to do this, we have a few tricks up our sleeves. Let me erase this. So देखें, सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखूं यहाँ पे def function और इसके अंदर I put a number there, a variable. This is basically a variable, and I return any random junk here. Let's say true. Pause this video, think about for a moment, and tell me, is there any possibly conceivable way जिसके अंदर I can access this local variable n outside this function? Is there any way to do that? So pause this video, think about it, and then we'll come back. Okay, and the answer is absolutely not. You cannot access this variable outside this function, because this is a variable which is local to this function. और जैसे ये function का frame create होता है, variable create हो जाएगा, और जैसे function का frame खत्म होता है तो variable भी साथ ही खत्म हो जाएगा. And there is obviously no way, even though कि function का variable frame जो है अगर वो memory में है भी, function execute हो रहा है, even then there is no way to access this variable from the outside. So this means that this function or putting your data inside a function is a good candidate to introduce this restriction around your black box. So अब हम क्या करना चाह रहे हैं? पहले हमने black boxes बनाए, उसके ऊपर हमने layers बनाई. अब हम चाह रहे हैं उन layers के ऊपर हम ताला लगाना चाह रहे हैं,
और functions हमने देखा कि एक good candidate है to restrict access to the data. So how do we do that? How can we access this thing outside the function? Is there any way? So it appears that there is a special function which is called a closure function. So closure function क्या होता है? So let me paste an example here. As you can see here, make error is a function और इसके अंदर it's another function and this is returning that error function. So make error is a higher order function which is returning another function. Higher order functions basically are functions जो कि या तो अपने parameter में functions लेते हैं या फिर they return functions. So this function is creating a new function and then it's returning that function. अब अगर आप adder को गौर से देखें तो यहाँ पे one is the parameter, second is a number which is a variable. This is not inside the adder frame. अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर एडर फ्रेम के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ से आ रहा है? तो ये इसके पेरेंट से आ रहा है. एसेंशियली एडर इज अ क्लोजर फंक्शन. क्लोजर फंक्शंस वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि अपने पेरेंट फ्रेम को जिसमें कि वो खुद क्रिएट किए गए हों अपने पेरेंट फ्रेम के वेरिएबल्स को रिमेंबर करते हैं एंड देन दे आर एबल टू एक्सेस दोज वेरिएबल्स. सो क्लोजर फंक्शंस आर फंक्शंस जो कि लॉन्ग टर्म में एक स्टेट जो है वो मेंटेन रखती है अनलाइक अदर फंक्शन जो कि चलने के फौरन बाद उनका फ्रेम खत्म हो जाता है. तो अगर हम करें एडर एड 5 इक्वल्स टू मेक अंडरस्कोर एडर 5. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी let's run it and let's run it and let's say you run this statement here. So it's going to create, it's going to return a function and it's going to put it in add 5 with the value of 5. So basically what's happening here is make error is called with the value 5 or then it's created an adder function or यहाँ पे it replaced x with 5 and then it returned essentially. No, that's actually not true. It's not replaced, but every single time जब ये हम call करेंगे, then it's going to go to its parent frame and then it's going to look at the value of x. Yeah, that's going to do it. We'll take a look at that. So for now, what I need you to do is you need to guess the type of add 5. What is the type of add 5? अगर मैं इसको enter करूँगा तो आपके ख्याल में क्या होगा? This is going to show function, of course, because we are returning a function from the make error. Okay, if this is a function, इसका मतलब है कि we should be able to call it short add 5. Add 5 is taking one parameter y, so add 5 10. Now if I press enter, can you guess what's going to happen? You can pause the video and try it out. So what this is going to do is it's going to add the value of x in the value of y. Y तो चलो आपके parameter से आ गया, लेकिन x कहाँ से आ रहा है? x जो है वो इसके पेरेंट फ्रेम से आ रहा है एंड सिंस दिस इज अ क्लोजर फंक्शन इट रिमेंबर्स द एनवायरनमेंट जिसकी अंदर से जिसके अंदर वो क्रिएट हुआ था इवन दो दैट एनवायरनमेंट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. रिमेंबर यहाँ पे हमारा मेक एडर फंक्शन चला, फ्रेम बना, मेक एडर अगली लाइन में एग्जिट हो गया फंक्शन रिटर्न करके, वो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो डिलीट हो चुका है. लेकिन इवन देन आपका जो क्लोजर फंक्शन है दिस इज रिटेनिंग दैट इंफॉर्मेशन जो कि इसके पेरेंट फ्रेम में थी और उसके वेरिएबल्स को उसका पता है. अगर हम इसको क्विकली उसमें देखें पाइथन ट्यूटर में, so this is what you're going to see. If you visualize execution, so यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this is made make error. Let me actually zoom it a little bit here. चलिए मैं अपनी शक्ल हाइड कर लूँगा अगर कोई मसला हो रहा होगा भी ज़्यादा. I think it's visible here. All right.
This is a make error. Let's go next. It creates a global frame. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि make error ने कॉल की है, इसका नया फ्रेम बना। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, अब इसका फ्रेम बना, इसके अंदर जो पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यू सेट हो गई। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। देन इट क्रिएट्स अ फंक्शन एडर और उसने उसका एंट्री यहाँ पे डाल दी ऑफ कोर्स, एंड देन इट रिटर्न्स दैट इसकी रिटर्न वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस फंक्शन। अब जैसे ही यहाँ पे फंक्शन चल के खत्म होगा, ऑब्वियसली दिस फ्रेम विल बी डिस्ट्रॉयड, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, इट इज डिस्ट्रॉयड, right? Okay, we are not calling our add function here, add 5 10. So now let's do that again. अब जब हमने add फंक्शन को कॉल किया, आप देखेंगे इसका अपना नया फ्रेम बनेगा, और add फंक्शन के अंदर now it's saying return x plus y। y तो चलो उस फ्रेम में अवेलेबल है, that is 10, लेकिन x उस फ्रेम में अवेलेबल नहीं है, तो x कहाँ से आएगा? Since this is closure, x will be in its parent. Basically, it remembers that x is coming from its parent, and that's exactly what it is. And then it returns x plus y, which is 15, and then that's what you see on the screen when you print this value. Okay, so can you make another adder with a different value? Sure, and let's do it right here. So यहाँ पे अगर हम एक और adder बनाते हैं, let's say add 10, and if you do add 10, basically whatever value that you enter, it's going to add 10 now and to that value. And you can simply print also. Let me just add the statement here. Print and print. Visualize execution. Next. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने एरर बनाया, ठीक है, और फ्रेम यहाँ पे डिलीट हो चुका है। But the thing is, it remembers कि कौन से फ्रेम से x की वैल्यू उसने उठानी। So when we call add 5, this is going to go to its parent frame, even though x is not here in this adder function, and then it's going to return that value, and then it's going to give it back. Now when you make another adder, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे it's going to create a new frame for this function that's going to return a function, and then it's going to return the adder function, and then it's going to, आपको पता है कि जब function return होता है तो it destroys the frame. So this is exactly what it is. Line number 10 में it creates a frame, then it destroys the frame, but in this case the value of x is exactly 10. और जो पिछला make error था उसमें value of x was exactly 5. But now the thing is, our adder 10 was created in f3 here, inside f3. इसका मतलब है कि this is going to remember the value of x in f3. So when you call this, value of x3 will come from that, and then it's going to print 30. So जितने make adders आप कॉल करेंगे उतने ही, जितने क्लोजर फंक्शंस एक्चुअली आप बनाएंगे उतनी ही environments यहाँ बनेंगी. These are actually dead environments, but the closure functions are able to access this. Okay, so this was a basic introduction to closure functions and the state that they are able to access. Even though the frame is destroyed, but they are still able to access. Okay, fine, great. इसका अब हमारे उससे क्या ताल्लुक है restrict करने से? Essentially, when you try to restrict the access like this, so you want to prevent the user from accessing your internal details. So this restriction basically is putting a lock on the black box. This restriction is called something called encapsulation, to encapsulate, to restrict. So abstraction is logically dividing your code into these abstraction layers, and encapsulation is to put a lock so that nobody can get inside or break those abstraction layers.
And now we are one step closer to implementing encapsulation. So जो शरारती बच्चा है जो क्या की बात नहीं मान रहा था, वो आपकी एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को तोड़ता जा रहा था, तो अब हम उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने लगे हैं जिसमें वो चाह के भी अंदर नहीं घुस सकता. So this is what encapsulation is. So let's redefine our point of creation code, and we put everything, at least the constructors, inside the this function called make point. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? This is a closure function. Obviously, you're not able to access x and y, and wherever you want to know the value of the point, it copies x and y inside a list, and then it returns that. It can be list, or it can be anything else. Basically, every time you call this function, it creates a new list, and then it returns that. And now आप get x or get y accordingly इसको change करते हैं. I'm not going to go into too much detail, but the thing is, to summarize, now you are not able to access the internal details like you were doing in the previous case. अब get x और get y यूज करते हुए आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. द कोड इज एक्चुअली गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं है कोड. देखें, एब्स्ट्रैक्शन का भी फायदा आपको सीधा यहाँ पे नजर आ रहा है कि even though you have completely changed the way you're creating a point, but distance का जो code है, that remains exactly the same, because we were respecting the abstraction barriers, and then we were using get x and get y accessors instead of directly getting the values of x and y coordinates. So similarly, is circle B, it remains exactly the same. और इसको यूज करने का जो तरीका है, that is also exactly the same. So you can simply use it like this. Assuming these functions are complete, which you can do that manually by pausing the video and checking this code, that this code basically जो यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. वो उसमें रत्ती बराबर भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि जो यूजर है उसका ब्लैक बॉक्स के इंटरनल से कतन को ताल्लुक है ही नहीं सिरे से, राइट. Okay, now can we change the value of, if we even try to do that, can we change the value of, let's say p? What's p? This is a function, right? Because make point is returning a function. So this is a closure function. So closure function को अगर call करें, then it returns this value. It creates a new list and then it returns that. Basically उसी copy return करता है. Original values वहाँ पे उसी frame के अंदर पड़ी हुई हैं. अगर आप चाहें तो उसको Python tutor पर run करके देख सकते हैं, और kindly करके भी देखें, हो सकता है final में आ जाए. Now, if it's a function, can we call p? Sure, and that returns the coordinates. Can we change? से आपका शरारती बच्चा वापस आ गया, पहला कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज करके 5 कर देते हैं. फाइन, ग्रेट. अब हम अगर दोबारा देखें p की वैल्यू, it's still 1 2, because every time you are accessing that function, it's creating a new list out of the values that are already stored in the frame, and then it's returning that list. So इसका मतलब है कि you are absolutely not able to access the internal details of that point in this case due to this closure property of the function. So हमने successfully encapsulate कर दिया अपना data, basically lock लगा दिया around the layers, abstraction layers. Okay, now can we do a little bit better? Can we change the value of this point? अगर हमने read करना है, अगर हमने actually change करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए what we have here is, let me
just quickly and briefly delete and paste the very small code. This doesn't have that get x, वो आप खुद से लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि you have a point which returns a copy of these values inside the new list, and then you have this function called setX. तो आप इसकी value जो है वो set कर सकते हैं to a new value. And the thing is, when you specify this non-local keyword, it means कि आपके जो parent frame जिसमें create हुआ था, ये उसको उसका वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, then it's going to override with that new value. And then आपका जो make point है that returns two things, pointer setX, and then you can simply set the value of that number to a new value, and then it's going to print the new value instead of the copy. So आपने देखा कि पिछली दफ़ा हमने चेंज करने के बावजूद अगर हमने इसको गेट करने की कोशिश की थी तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इस केस में क्योंकि अब आप उसके नॉन लोकल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं जो कि इसके पेरेंट फ्रेम में है, देन इट्स गोइंग टू अपडेट दैट वैल्यू. ओके, इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट इट्स क्लियर. लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ n, राइट, और f ऑफ n के अंदर यू हैव दिस variable called n equals to 8, right? And then you have def set n with the value of val, and we say non-local n, and then n equals to val, right? And then we can simply return set n function. And now my setter equals to function. Basically this is going to return that set n function. And now what we can do is, if we call my setter with the value of, let's say, 12 or 10, so then what's going to happen is, let's execute and let's check it out. So I would recommend that you pause this video right here, right now, and then try to guess what's going to happen here, and then we can resume this later on. So I'm just going to press next here. Let me briefly resize. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि this is creating a new frame, the global frame. अब यहाँ पे आपका जो function था fn, इसका frame बना, उसके अंदर you have this number variable with the value 8, और इसने एक function create किया और उसने return करके frame आपको destroy हो गया, जिस तरह कि आप देख रहे हैं. It's disabled completely. The only function that can access this frame, the internals of this frame, is the closure function जो कि इस function के अंदर बना था. So now we are calling this closure function with the value 10. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे it has defined this non-local n. Non-local n means कि अपने parent में जाओ and then override the value with val. अगर आप non-local ना लिखते तो आप कभी भी इसको change नहीं कर सकते थे. So the only way to change this this frame is through the non-local keyword. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे when I press next, तो आपने देखा कि इसका जो parent frame, even though that is disabled, उसके अंदर जो value है that is now being updated with the new value here. Okay, fine. So just to summarize, अभी तक हमने क्या किया है? अभी हमने abstraction layers create की और उसके around हमने lock लगा दिया है, और उस lock के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ विंडोज खुद से डिफाइन किए हैं, जिस तरह यहाँ पे सेट एक्स है, सो दैट आप इसी विंडो के थ्रू ही अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर जा ही नहीं सकते हो, डाटा एक्सेस कर ही नहीं सकते, ना ही चेंज कर सकते हैं उसको. सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट, कि यू गिव फंक्शंस और इंटरफेस एंड देन हाईली स्पेसिफिक इंटरफेसेस जिसके थ्रू यू कैन change or read the data basically. Can we do better actually? And the answer is, let's try. So let's define our make point like this. So इसमें क्या हो रहा है? You have put all of the functions inside this black box basically.
और अगर आप गौर से देखें तो दिस इज वन ऑफ द properties of an object in object-oriented programming, that it's a black box which has its data and its behaviors inside that, right? And that's what we're trying to achieve here. So इसके अंदर now make point is going to create a new point. Then we have the constructor function, and then we have those distances and is within circle, which is exactly the same as before. But the thing is here, we are only returning is within circle. Okay, अब क्योंकि ये सारे के सारे हमने फंक्शंस इस फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, विच मीन्स कि देर इज एब्सोल्युटली नो वे टू एक्सेस एनी ऑफ दीज फंक्शंस अनलेस एंड अनटिल यू रिटर्न दैट फंक्शन. सो यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज द ओनली फंक्शन वी कैन यूज. Now, how do we create a point? Basically, what we can do is we can create a point like this. So basically, क्योंकि ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, we have to specify two things here, as within circle or point P. So we make a point. और अगर आप देखें, since P point basically is a function, and you can verify that here, that's a function. You can call P, and that gives you a copy of the internal state. This is not the actual internal state, this is a copy of an internal state. इसको change कर भी दें तो internal state change नहीं होने वाली. All right. So we have made a point P. Now let's create a center point C. So अब यहाँ पे देख रहे हैं कि C भी दो वैल्यूज रिटर्न करता है. We have to change the name because वो same नाम हो जाएगा, then we won't be able to use the function for P here. इसका कोई भी नाम रख लें आप. मैं बेसिकली यहाँ पे इसको अंडरस्कोर रख लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू कंप्लीटली इग्नोर दिस. अगर आपने यूज़ करना है तो देन यू कैन नेम इट एनी वे यू लाइक, राइट. आपके पास दो पॉइंट्स आ गए P और C. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली चेक द P's function, is it inside the circle? We print the value with the point P and the center C 3, so it returns true obviously. So और इसमें एक मज़े की जो चीज़ है वो आप देखें कि now you are not able to access or use these get x, get y or distance functions, even though is within circle you are able to call, and is within circle is using distance, but you are not able to do that. You cannot access distance in any way whatsoever. The only way that you are able to access distance is that you actually expose this to the user by returning it. And we also, let's say, get underscore x, we also return these things basically. So अब देखें यहाँ पे अगर हमने एक नया पॉइंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें चार चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, डिस्टेंस एंड देन गेट एक्स एंड देन पॉइंट, राइट. सो ये चीज़ें हमारे पास आ गई और वी कैन सिंपली गेट x is a function जिसके अंदर p is being passed. तो अब देखेंगे कि it gives you 1. Can you call get y? Of course no, because वो हमने expose नहीं किया. अब अगर आपने दूसरा पॉइंट बनाना है तो उसके लिए भी you have to keep track of these things, and this is a real mess basically. Now our code is getting really messy. So what we have done is we have separated data, we have separated its operations, or we have made sure that we have those abstraction layers and we don't cross those abstraction layers in any way. और कोई और भी आपकी abstraction layers cross ना कर सके, we have created this encapsulation so that जो चीज़ आप दिखाएंगे सिर्फ वही यूज कर सकेगा यूजर. अभी तक हमने इतना किया. Is there a better way to do this? And the answer is yes, using dictionaries. And how do we do that? This is attempt number 2. The code is going to remain pretty much the same. The only thing that is going to be different is instead of returning 4 things, we are going to return a dictionary of 4 things. And this is what it looks like. Just like before, we are returning x
because that's inside the parent frame. So this is a closure function. Closure functions are able to access the parent frame. Get y. And this distance, again, our distance is not going to be changed. Or how is this actually returning? How is this accessing? It's going to be changed a little bit, yes. वो हम देखते हैं कि why is that the case. अब लेकिन जो यूजर है जिस तरह से वो आपके पॉइंट्स बना रहा है और आपके प्रोग्राम को यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने किया क्या एग्जैक्टली. अब हमने एक डिक्शनरी रिटर्न की जिसके अंदर जो जो फंक्शंस आप यूजर को एक्सपोज करना चाह रहे हैं हमने सिर्फ वो डाल दिया. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने चारों फंक्शंस को एक्सपोज किया हुआ है. लेट्स से वी क्रिएट अ पॉइंट. We create 3 points. We run this code and let's see the values of these points here. Point P, what's the value? अब आप गौर से देखें, make point is returning a dictionary, right? और अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो that's a dictionary. और डिक्शनरी में से अगर आपके पास you have key value pairs, तो हर की के अगेंस्ट pause the video and take a look and tell के हर की के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, what's the type of that value. So for example, key, the key is, let's say, get underscore x. So what's the value that we are storing here? A function, which means that you are able to call it using this function invocation syntax, right? और जब हम उसको कॉल करते हैं get x, it gets you exactly this, and this, when it's called, it gives you the x coordinate. Or similarly, when you call get y, that gives you the y coordinate, right? That's pretty straightforward. So हमने 3 points यहाँ पे बनाए, P, Q, and C. So let's check the distance between, let's check whether this is within a circle or not. So inside this is within a circle. We pass 2 parameters. पहले हम 3 parameters pass कर रहे थे और उसकी वजह ये है कि now we know कि what's inside this frame. We can simply directly use those coordinates for P. So अगर हम ये देखते हैं, that is going to say true. And what's the distance between P and Q? So now you're interacting with objects here. So you're invoking the function distance with the single parameter, which is the other point, and that computes the distance between P and Q, and you get 4.2. So this is the public interface. इसके अलावा जो यूजर है वो आपके किसी और फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता. सो पब्लिक इंटरफेस आपके हाथ में, आप कंट्रोल करते हैं कि यूजर क्या यूज कर सकता है, किस चीज के ऊपर उसको. सो दिस इज योर पब्लिक इंटरफेस. इसमें यू डायरेक्टली कंट्रोल के आपका यूजर किन फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, किन को नहीं. अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ, लेट्स से आप चाहते हैं कि वो डिस्टेंस को एक्सेस, सो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस विद इन सर्कल को एक्सेस ना कर सके थे, इवन दो इट्स इनसाइड दिस interface, this object here. So this is your public interface. Public interface, again, let me reiterate, it defines what your user can see. इसके अलावा user cannot see anything else. So these are the windows through which the user can go inside your black box, and the other layers are locked. So यहाँ पे आप देखें, if you run this, can you access get x? Yes, you can. Can you access distance? Yes, you can. Can you access isn't within circle? No, you cannot, because you have just simply removed that from the public access. Right. So this is basically the essence of encapsulation. Encapsulation means, again, to restrict access inside your abstraction layers, the black boxes that we created.
And this is one of the ways to do that in Python. There could be more ways, but we are not touching those basically. So now what I want you guys to do is I want you guys to pause the video here and try this. So you are to create simple objects, basically a function that creates rational numbers, right? Just like we create a function which created points. So यहाँ पे आपने क्या करना है, step number 1, identify the data. Now object हमने देखा था क्या होता है, it has data, it has behaviors. Rational numbers हम देख चुके हैं, it has data, it has behaviors. The data is in numerator, denominator, and the behaviors are, you know, add rat, mul rat, print rat, and basically also numer denom to access those numerator, denominator. Those are called the accessors. So basically this is going to be a black box जिसमें the only way to interact with this object is going to be the public interface which we will expose through this dictionary. उसमें हम ये 3 functions basically डाल देंगे, and then you create a function, create an object here. So pause this video, create that constructor function, and I'll reveal the solution in 3, 2, 1. Okay, the solution is again pretty straightforward. तो इसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि create abstraction layers, those black boxes, and then put locks around those black boxes. And one of the ways to put locks around those black boxes is through closure functions. यहाँ पे हमने get numer accessor बनाया, get denom accessor बनाया, which returns numerator and denominator. और ये सारा कुछ इस make rational के अंदर है, which means कि you are not able to access these functions directly, except for whatever you return in this dictionary. Similarly, add rat जो है, that's a function. Mul rat is a function. A print rat is also a function. So इस public उसमें इंटरफेस में जो फंक्शन आपने स्पेसिफाई किए हैं, then you should be able to do that. अगर आपने rational numbers बनाने हैं तो then you have to create using this constructor. Now R1 is a dictionary, R2 is a dictionary, and each dictionary has their own basically that parent frame. उसके अंदर उनकी अपनी values हैं, but the interface is the same for all these values. So basically अगर आपने R1 और R2 को add करना है और you want R3, so R3 equals to R1. Since this is a dictionary, how do we get add function to work? So that's going to be key, add. And then since this is a function, we call that function, और इसका parameter क्या जा रहा है आप देखेंगे ऊपर, add. Is it add or is it add rat? Yeah, basically under internal name is add rat, but dictionary के अंदर जो key है that is add. और add rat के अंदर we have giving it another rational number R2. So we got that. और R3 को अगर हमने print करना है to see the value कि हमारे क्या मिली है, तो print R3, of course that returns a function because that's what it is, print rat. You need to invoke the function to see the value here, and that's 5 by 6 when you add these two values. So that's the way to create objects which have appropriate abstraction layers and which is also encapsulated and protected from unauthorized user access. So to as another sample example, let me share some code with you and you will try this. Okay, now you try the following. You are to create a tele-counter object. Basically, you have to create a function that creates
टेलीकाउंटर ऑब्जेक्ट, टेलीकाउंटर आपने वो देखा हो, क्लिकर वो जो क्लिक करते हैं देन उसके ऊपर काउंटर चलता है। तो उसके अंदर डाटा क्या है? द काउंटर, श्योर। उसके अंदर टेलीकाउंटर के बिहेवियर्स क्या हैं? So telecounter object has data, which is count, and telecounter object has behaviors, which is, you know, increment, which increases the counter by 1, and then you have reset, which resets the value to 0, and then you have get count, which prints the value of the counter. Now again, the object, in this case you need to expose only 2 functions, not 3, even though 3 are required, but you expose only 2. So जो तीसरा है, that maybe is used internally, we don't know. So how do we write a constructor function to create telecounter objects, basically? Pause this video, try to write it yourself, and then we come back after 3 seconds. 3, 2, 1. So this is a solution. Again, आपके पास जो count है, जितनी दफ़ा आप टेलीकाउंटर बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू डेड फ्रेम, और उस डेड फ्रेम में काउंटर की वैल्यू जो है वो आपके पास हर किसी फर्क होगी। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। Similarly, you have defined the get count, you have defined the increment. अब आप गौर से देखें यहाँ पे increment जो है, it's accessing its parent frame, उसके अंदर it's doing non-local count and then it's incrementing its value by 1. Reset again, it has to access its parent's non-local count and then reset to 0. अब this is our public interface, इसके अंदर हमने increment assign कर दिया, हमने get count assign कर दिया, लेकिन जो required था reset वो हमने यहाँ पे नहीं डाला, जिसका मतलब है कि the user is not able to access this reset anymore. तो driver code हम यहाँ पे telecounter बनाने के लिए, let's run this code. How do we create a telecounter? TC telecounter equals to make telecounter. That's as simple as that. अगर आपने इसको increment करना 3 दफ़ा, तो you call the function or appropriately increment 3 दफ़ा. Again, you have to invoke this using parentheses. अब आपने इसकी value get करनी है TC. So the public interface that we had exposed is get count, and then this is a function. This is going to obviously return 3. Now we need to reset the counter. TC reset. अब since ये function आपने expose नहीं किया, it gives you an error. Let's expose this function. So this is reset, and we call it let's say reset, the key value pair. अब when you run this code, oh, there has to be a comma here. Now you run this code, you create a telecounter object, sure, you increment this 3 times, sure, and then when you print get count, it says 3, and now when you reset, of course you need to call this function, and then you print again get count, it says 0, right? So basically, again, to show you that you are the one who's controlling the public interface. So public interface is the key, and putting a lock around your abstraction layer is also the key. That's the consequence, basically. So to summarize our lecture, what we have studied in this lecture is encapsulation is essentially restricting access to your lower level or less abstract layers, or only showing the high level layers जो कि आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, and it puts an effective lock security layer around your code. So Python में encapsulation आप क्लोजर्स के साथ कर सकते हैं, क्लोजर फंक्शन जिस तरह अभी हमने देखे थे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शंस। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो आप ऑब्जेक्ट के इंटरनल डिटेल्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि आप ऑब्जेक्ट को एज अ होल यूज़ करते हैं। जिस तरह 2 रैशनल अगर आपने ऐड करना है तो यू से ऐड
rational 1, comma rational 2. You don't say कि add rational 1 का numerator and rational 2 का numerator and then denominator and etc. और objects जो हैं abstraction तो उसमें है यानी कि you put things in black box but you also have encapsulation in that, meaning कि the access is restricted to that black box. You cannot go and peek inside without your proper approval. And the proper approval is that public interface जो कि हम return कर रहे थे वहाँ पे. Every object has a unique identity and state, basically the data and the behavior. और data abstraction वाले lecture में हम देख चुके हैं कि the way you do data abstraction is it's again a way to organize the code in which you keep the data separate and the methods ये functions जो कि उस data पे operate कर रहे हैं separate. And the only way that you can access those the data is through those functions. And then message passing, objects can pass messages to each other using basically by invoking their functions. So अभी तक आपने देखा कि हम effectively objects fully functional, almost fully functional बना चुके हैं. They are which are following the rules of object-oriented programming. So basically आप कह सकते हो कि किसी हद तक we have started object-oriented programming and you've seen that object-oriented programming in this session. लेकिन इसमें एक इशू है और अभी तक हमने जितना कोड देखा है वो देखा है कि इट्स object oriented programming. Basically it's a way to organize your code such that your code is modular, your code is abstract, and it's easily maintainable, replaceable, and bug free in the long run basically. So that's what abstraction and encapsulation give us. So see you next time. Office.